Good morning, students. Welcome to JPIS. Today, I am PC Misra, your computer teacher. In this video, we have learned about the computer language. Firstly, we will discuss what is computer language. Language is a medium to express our view and feeling. Language is the one type of the medium to express our view and feeling. To communicate with a computer, we are also need a language which it understands. First point, a program. A program is a set of instructions which tell the computer what to do. Second point is the process of writing a specific instruction in a computer language is called programming. And third point is the people who do these jobs are called programmer. In this point, three questions are given. First question is, what is program? A program is a set of instructions which tell the computer what to do. And second question is programming. The process of writing an instruction in a computer language is called programming. And third question is the people who do this type of job is called programmer. And our third question is what is programmer? The computer language can be classified into four categories. First, machine language. Second, assembly language. Third, high level language. And fourth generation language. First and second is also known as low level language. First, we will discuss machine language. It is expressed in a binary form. Machine language known only for the binary forms, that means 0 and 1. It is the two state, 0 means off, 1 means on. Two state, 0 and 1. 0 means off, 1 means on. Machine language has the advantage of very high speed and low memory utilization. This language is extremely the machine dependent. That means the machine language totally depend on the machine. A machine language program written in the one computer may or may not be run to the another computer. That means if we are writing any program in the one computer, same program we copy to the another computer, that program is run on the another computer also. This is known as the machine language. Machine language is also called the low level language. Low level language, low level language, because the some small task given by the computer and computer can perform, it is known as the low level, and the short form is LLL. And next point is assembly language. In this language use mnemonic code. Students, remember it, machine language use the binary code and assembly language is use the mnemonic code. It is the symbol of 0 and 1 instead of remembering the extra memory allocation where the data and instruction are stored. In the symbolic memory addresses are used for the data. It is not used for the 0 and 1. 0 और 1 के स्थान पे ये कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करती थी जिसमें अपने डाटा को स्टोर होता था और कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में. Since the computer can understand only the machine language, assembly language program have to convert it into machine language, because we know that computers only understand the machine language, that means 0 and 1 form. Assembly language is written in the another form. So computer is never known the assembly language, so that we can convert the assembly program into the machine language, we can use the converter. Translators program known as the assembler. That means this line is a very important line.
translator program known as the assembler, जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर. इट इज आल्सो रिगार्डेड एज द लो लेवल लैंग्वेज. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज both are in the form of low level language. Some key points are there. Lady Adrolens is regarded as the first computer programmer. The first question is, who is called the first computer programmer? And second, machine language is also called the first generation language. Second question is, which language is called the first generation language? That means machine language. Assembly language is also a machine dependent. And next point is high level language. High level language means some problem in machine language and assembly language में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करके एक नया लैंग्वेज डेवलप किया गया है, दैट इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज. द रिस्ट्रिक्शंस इन द uses of the machine language and the assembly language prompt people to develop a language with the following features. And the some features of high level language is simple and user friendly. It is the very easy language and the user friendly because we are knowing about the Hindi and English. We can type any commands in the English and they will understand. Language which is in a machine dependent. The high level language is also a machine dependent. We can write anything in a computer. So firstly it convert into the machine language, then the computer solve our problem and give the output in the machine language, and it is also convert in the high level language. The above feature it become easy to learn and use to the computer language. A large number of people started writing to the computer programming using this language. In this language, C, C++, Java and Advanced Java. C, C++, Java and Advanced Java are the very popular in the high level language. Students ये ध्यान रखना है कि high level language that means C, C++, Java ये जितनी भी लैंग्वेज हैं ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर. प्रोग्राम आर द टू टाइप्स कन्वर्टिंग टू द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज. दैट मीन्स कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को एक ट्रांसलेटर के थ्रू मशीन कोड में ट्रांसफ़र करता है, फिर मशीन कोड के इंस्ट्रक्शन को हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, तब हमको आउटपुट शो होता है. तो ट्रांसलेटर हमारे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप के हमारे ट्रांसलेटर हैं. फर्स्ट ट्रांसलेटर इज इंटरप्रेटर एंड सेकेंड इज कंपाइलर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरप्रेटर. दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट टू द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज. इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन. दैट मीन्स आप लोग ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इज नोन एज interpreter. That means suppose we are writing the one line, when we press the enter, interpreter can check it. If any fault in this line, the users will not type the another line. जैसे आप एक लाइन लिखे हो, अगर उसमें कुछ भी गलती होती है तो आप दूसरी लाइन नहीं लिख सकते जब तक उस गलती को हम सुधारें नहीं. ये हमारा काम था इंटरप्रेटर का. बिकॉज इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द एनी प्रोग्राम बाय line. It convert one line execution the instruction and then repeats the procedure for remaining instruction. Some examples कि suppose if you are going here and there for to meeting the one people. Suppose हम यहाँ से उड़ीसा गए हैं और उड़ीसा में जो वहाँ हमको बात करनी है वहाँ की उड़िया लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती है. हमको हिंदी या इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन हमारे सामने वाले जो बंदा खड़ा है उसको उड़िया समझ में आती है. तो हमारे कन्वर्सेशन के लिए हम कोई भी एक ऐसा हम पर्सन को चुनेंगे जिसको इंग्लिश भी आती हो और
उड़िया भी आती हो, या फिर हिंदी भी आता हो और उड़िया भी आता हो, तो हमारी बात वो उनसे बताएगा और उनकी बात हमारे तक कन्वर्ट करेगा। वही एक यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सपोज द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इन इंडिया ऑफ एन द ऑफिशियल टूर। In order to understand each other, the French president and the Indian prime minister requires the interpreter who can interpret French language into the machine language, vice versa. And second point is compiler. That means, what is compiler? It is also a translator program. It converts a whole program at once. It generates to the object code from the program along with the error. Suppose if we are writing the any programs in a computer, we can complete our whole programs. Then when we will run the program, compiler can execute whole program at a time and show the all error in the downside. Next is fourth generation language. Fourth generation language is also known as short form is 4GL. The fourth generation language are combined of the machine language are following features. Some important features of the fourth generation language are highly user friendly, very high speed of execution, and third is reduced level of programming efforts. Fourth is minimum efforts from the users to obtain any information. In 4GL, fourth generation language, the user has just specified the required output and the format of the output without bothering about the step required to obtain that. Next is discuss the some features of the languages. That means assembly language, machine language, high level language and fourth generation language. चारों लैंग्वेज के हम कुछ फीचर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड द फीचर्स आर फर्स्ट मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी कोड बी डिपीट ऑपरेट एंड डाटा, मशीन डिपेंडेंट, ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। मीन्स अगर हमको मशीन लैंग्वेज में कुछ लिखना पड़ता था तो हम 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखते थे। एंड नेक्स्ट आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज फीचर। मैनेमिक कोड्स आर द सिंबॉलिक कोड्स इंस्टेड द बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर्स की जगह पर यहाँ पे हम मैनेमिक कोड या फिर कुछ सिंबॉलिक कोड यूज करते थे। दिस लैंग्वेज इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट, हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेटर प्रोग्राम आर यूज्ड। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखना कि सबसे फर्स्ट ट्रांसलेटर प्रोग्राम हमको असेंबली लैंग्वेज में यूज किया गया था। देन हाई लेवल लैंग्वेज फीचर, इंग्लिश वर्ड एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ध्यान रखना है कि जब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुआ वहीं से हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपने इंस्ट्रक्शन देना शुरू किए। नेक्स्ट मशीन डिपेंडेंट मीन्स द इंग्लिश वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी, देन बाइनरी कोड एंड 0 and 1 forms, then computer is understand, has to be converted into the machine language by the translator program. And the features of fourth generation language, machine independent, minimal user skill required to obtain the result, and application development tool. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से हम कुछ एप्लीकेशंस को भी हम जनरेट कर सकते हैं इन द इजी वे। नेक्स्ट सम की पॉइंट्स आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट इंटरेक्ट कंप्यूटर गेम वाज स्पेस वॉर। स्टूडेंट रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेस वॉर। एंड सेकेंड, कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। Locator identify separation protocol. What is the full form of LISP? And next, programming is the process of writing specific instruction in the computer language. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि जो हमारे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन क्वेश्चन को भी हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग वीडियोस। In the next video we have teach next
chapter.